ऑल राइट, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है, राइट। और प्लीज़ नोट के कैश कन्वर्जन साइकिल की जो ये 3 वीडियो लेक्चर्स मैंने अभी तक बनाए हैं, इसके ऊपर हमने सबसे पहला जो पार्ट 1 था कैश कन्वर्जन साइकिल का, उसके अंदर हम लोगों ने ऑपरेटिंग साइकिल को डिस्कस किया था, राइट। हमने शॉर्ट टर्म एसेट्स को, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को डिस्कस किया था। और वो बेसिक आपकी ग्राउंडिंग हो रही थी ताकि आप समझ सकें कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है। फिर पार्ट 2 के अंदर कैश कन्वर्जन साइकिल के उसके हमने एक्चुअली कैश कन्वर्जन साइकिल को डिस्कस किया कि कैश कन्वर्जन साइकिल होता क्या है, और उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, बेसिक जनरल डिस्कशन होगी कैश कन्वर्जन साइकिल के ऊपर। और उसके बाद हम लोग एक वर्क एग्जांपल देखेंगे, राइट। एंड देन उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, राइट, इसके बाद जो लास्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर में हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट नोट ऑन कैश फ्लो साइकिल के ऊपर होगा कि किस तरीके से कंपनी जो है वो अपनी कैश फ्लो साइकिल को इम्प्रूव कर सकती हैं, राइट। तो दैट्स बेसिकली गोइंग टू बी द डिस्कशन ऑफ द नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो। तो अभी इस वीडियो के लिए अभी हम लोग बिफोर आई गेट इनटू द एग्जांपल, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक छोटा सा बेसिक जनरल डिस्कशन है कैश क्रेडिट साइकिल के ऊपर। एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट बाय स्टेटिंग दैट जनरली कैश क्रेडिट साइकिल जितना छोटा हो उतना अच्छा होता है, ठीक है। और जितना लंबा ऑफ कोर्स उतना द मोर डेट्रीमेंटल इट इज फॉर द कंपनी, राइट। उसकी क्या वजह है? बेसिकली कैश कन्वर्ट साइकिल बेसिकली होता क्या है? कैश कन्वर्ट साइकिल जो है बेसिकली it's basically how long you have invested or how your money into the business, right? Basically वर्किंग कैपिटल के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें कि वर्किंग कैपिटल सबसे पहले क्या होता है, वर्किंग कैपिटल जो है वो जिसे हमने डिस्कस किया था कि वर्किंग कैपिटल जो है वो बेसिकली it's the investment or the resources required to keep your बिजनेस रनिंग, राइट। जिस तरीके से आपकी जो डेली ऑपरेशंस हैं उनको रन करने के लिए, यानी कि उसके अंदर आप रॉ मटेरियल, राइट, टू कीप योर बिजनेस रनिंग, रॉ मटेरियल, यूटिलिटीज, राइट, रेंट, इस तरह की जो चीज़ें आपकी आ रही हैं सारी, वो सारी वर्किंग कैपिटल के अंदर जा रही हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये जितना तो इन्वेस्टमेंट हो रही है यार, राइट। तो डिस्कशन ये हो रही थी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी वर्किंग कैपिटल है, ये बेसिकली आपका जो पैसा है, राइट, योर फाइनेंशियल रिसोर्स, उसको उसको कैप्चर कर लेता है, राइट। एंड इट कीप्स योर मनी लॉक्ड, राइट, बिकॉज बिकॉज यू हैव टू पुट इन मनी, राइट। यूटिलिटीज के पैसे देने हैं, हर चीज़ के पैसे देने हैं, राइट। रॉ मटेरियल खरीदना है उसके पैसे देने हैं, आपकी अगर कोई आपके और कोई पेबल्स हैं, राइट, उनको उनको देना है। तो उसके लिए आपको पैसा जो है अपना इंगेज करना है। तो नाउ द प्रॉब्लम विद दैट इज कि अगर आप पैसा अपना इंगेज जितनी देर तक आपका पैसा इंगेज रहेगा, इट्स बैड फॉर यू, राइट, बिकॉज आपकी रोलिंग कम हो रही है, राइट। यू बेसिकली वांट अब गुड बिजनेस के बारे में आपको मैं बताऊंगा। अच्छा बिजनेस वो होता है जिस तरह अभी मेंशन किया गया, द शॉर्टर द कैश कैन साइकिल द बेटर। द रीजन फॉर दैट इज कि आपका वर्किंग कैपिटल आपका जितने कम आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी बिजनेस की, उतना आपके लिए अच्छा है, बिकॉज यू कैन स्केल योर बिजनेस, राइट। बिकॉज क्यों स्केलेबिलिटी क्यों आपकी आ जाती है? क्योंकि आपके बिजनेस के नेचर ऐसा है, आपका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि आपको ज़्यादा पैसा चाहिए ही नहीं, राइट। वो कैसे होता है अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशंस जो है वो how does having the right business model या आपका how does shortening your cash conversion cycle, how does that actually help you or how does that help the business from an investment point of view, right? क्योंकि जिस तरह मैं भी बोला कि हम लोगों को बेसिकली अपनी इन्वेस्टमेंट कम से कम लगानी है और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाना है, राइट। बिकॉज रिमेंबर the return on investment is what is there is this thing called the return ROI,
return on investment, right? That's basically your profit, okay? The profit you make divided by your total by your investment, okay? Okay. तो जितनी आप इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, राइट, अगर आपका प्रॉफिट ना भी बढ़े तब भी, even if your profit is if it's stagnant, if it's not, even if it's not growing, but just because your, if your investment goes down, right, in that case your ROI or your return on investment is going to go up, right? Because when the denominator in this formula, when it goes down, the ROI will go up. Okay, तो ये इस पर्सपेक्टिव से जो है देखना जरूरी है, ठीक है ना? नाउ, तो अभी अभी कमिंग बैक टू द स्लाइड, जिस तरह मैंने इधर पॉइंट आउट किया कि जनरली द शॉर्टर द कैश कन्वर्जन साइकिल द बेटर, ओके? और उसका मतलब मैं एक दफा और रिपीट कर दूं कि हैविंग अ शॉर्ट कन्वर्जन साइकिल मींस दैट द कंपनी कन्वर्ट्स इट इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, राइट? रिमेंबर, इन्वेंटरी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। इन्वेंटरी कैसे आती है आपके पास? इन्वेंटरी आप पैसे पैसे लगाते हैं, राइट? तो आपकी जो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है उसको आप बहुत जल्दी, द शॉर्टर, अगर आपका कैश कन्वर्जन साइकिल छोटा है, इसका मतलब है कि आप अपनी जो इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको आप बहुत जल्दी या रिलेटिवली सूनर यू आर कन्वर्टिंग इट बैक इनटू कैश, ओके? तो ये रिमेंबर, कैश कन्वर्जन साइकिल, आई रिमेंबर मेंशन दैट इट्स अ साइकिल, इट्स एन ऑनगोइंग साइकिल। तो जितना जल्दी आप इन्वेंट्री खरीदने के बाद, यानी कि उसमें इन्वेंट्री के खरीदने के बाद हमने मतलब इन्वेंट्री के पैसे देने के बाद, जब आपने कैश पेमेंट कर दी इन्वेंट्री की, उस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक जब तक आप कस्टमर से कैश नहीं रिसीव करते, वो टाइम जितना छोटा होगा, जितना कम होगा, उतना जल्दी आपकी रोलिंग होगी, राइट? इतनी आप जल्दी रोलिंग में आएंगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इज गोइंग टू गो अप, राइट? बिकॉज यू आर, what are you doing? You are basically paying for inventory, converting into right, you're paying for your raw materials, right? Raw material की investment आप कर रहे हैं, और उसके बाद आपने इन्वेंट्री बनाई और फिर उसके बाद आपने उसको जो बेचा, तो और उसके बाद जब कैश रिसीव किया तो आपने ये आपने प्रॉफिट अपना बना लिया, और आपकी एक रोलिंग का आपका साइकिल पूरा हो गया। फिर आपने जितना जल्दी आप करते रहेंगे यानी कि अगर कैश फ्लो साइकिल छोटा है, इसका मतलब है आप जल्दी जल्दी पैसे पैसा लगाते हैं अपनी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के अंदर, और फिर आपका उसके बाद जल्दी से वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी आप प्रॉफिट साइड पे कर लेते हैं। देन यू गो इनटू द नेक्स्ट साइकिल। If you keep it's rinse and repeat, keep doing that over and over again, and your profitability can just shoot up, right, over a specific period of time. So for example, एक साल के अंदर अगर आपका देखिए कैश कन्वर्टर साइकिल आपका द शॉर्टर इट इज, राइट, तो आप एक साल के अंदर लेट से पहले आप 10 साइकिल चलाते थे, अब आपने 15 साइकिल चलाना शुरू कर दिया, आपको कैश कन्वर्टर साइकिल छोटा हो गया, तो आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो एक की जगह 10 की जगह आपने 15 करने लिए, तो आपकी ऑफकोर्स प्रॉफिटेबिलिटी is going to go up, keeping all other things constant, right? तो ये situation, this is important to understand. Now, अच्छा, और उसके the obvious, it's an obvious thing, लेकिन I'm still going to mention it, कि the longer the cash converter cycle, the higher the amount of working capital the company will need. Okay, that makes a lot of sense, because अब आपका अगर कैश कन्वर्टर साइकिल बहुत लंबा है, राइट, if I compare two companies, जिधर एक कंपनी जो है उसका इट्स गॉट शॉर्टर कैश कन्वर्टर साइकिल, और दूसरे के अंदर इट्स द सेकंड कंपनी हैज अ लेट्स से द ट्वाइस द अमाउंट ऑफ वर्किंग, द कैश कन्वर्टर साइकिल जो है उसका टाइमिंग, इट टेक्स 2 times the cash converter cycle, जो टाइमिंग है, इट्स ट्वाइस एज मच एज द कैश कन्वर्टर साइकिल ऑफ द फर्स्ट कंपनी। तो सेकंड कंपनी का पैसा ज्यादा देर तक इंगेज रहेगा, राइट? ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, जो तो उसकी जो सेकंड कंपनीज का कैश कन्वर्टर साइकिल इज लॉन्गर, इट्स गोइंग टू टेक, it's going to require more capital, right? All other things equal, okay? Now, coming to the next point, ये भी हमने डिस्कस कर लिया सेकंड पॉइंट के, द लॉन्गर द कैश कन्वर्टर साइकिल द हायर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट इज नीडेड। ये बात बड़ी इट्स क्वाइट ऑब्वियस एंड वी जस्ट डिस्कस्ड इट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नेगेटिव कैश कन्वर्टर साइकिल भी हो सकता है,
राइट? इट्स नॉट जस्ट, अभी हम कैलकुलेशंस करेंगे, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जब जाएंगे तो हमको शो यू फ्यू कैलकुलेशंस। उसके हम देखेंगे कि कंपनी कैन हैव नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल व्हिच इज इवन बेटर, राइट? एक तो है ना कि पॉजिटिव में है, दो कंपनीज हैं, एक का 50 दिन कैश कन्वर्जन साइकिल है, कंपनी ए का कैश कन्वर्जन साइकिल जो लेट्स से 50 डेज है, और कंपनी बी का कैश कन्वर्जन साइकिल 10 डेज है। So of course, company B, all other things equal, company B is in a better financial position, right? It's going to require less amount of working capital. Now, as compared to these two, अगर एक कंपनी सी आ जाए जिसके हम कह रहे हैं उसका वर्किंग कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव है, तो उसके अंदर तो फिर आपको और भी फायदा। इसका मतलब वो, और कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है? हैविंग अ नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल मींस कि आप जो है वो अपने कस्टमर से पहले पैसे पहले रिसीव कर लेते हैं, राइट? एंड देन यू पे योर सप्लायर्स आफ्टर दैट। अगर आपको याद हो कि मैंने आपको जो पहले डिस्कशन की थी ऑन द फर्स्ट टू द लास्ट टू वीडियो, हमने ये डिस्कशन कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आप पहले रॉ मटेरियल्स को अक्वायर करते हैं, ठीक है, फिर उसको इन्वेंट्री में कन्वर्ट करते हैं। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में आपका पैसा पहले लगता है ना। आपको पहले जनरली नॉर्मली जो है वो आपको पहले इन्वेंट्री के पैसे देने पड़ते, रॉ मटेरियल के पैसे देने पड़ते हैं, फिर रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, उसमें और पैसे लगते हैं, जो भी है उसमें टाइम लगता है। तो और फिर आपको जाके जब इन्वेंट्री क्रिएट हो जाती है उसके बाद जाके आप उसको बेचते हैं, और फिर आप उससे अपने कस्टमर से पैसा रिसीव करते हैं। इज दैट नॉट हाउ इट वर्क्स? तो उसके अंदर फिर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि तो ये तो नॉर्मल कैश फ्लो साइकिल हो गया। लेकिन अब द गुड पार्ट इज, द बेस्ट पार्ट इज कि फॉर सम कंपनी जिनका कैश फ्लो साइकिल नेगेटिव है, इसका मतलब है कि सप्लायर जिनको पैसे पहले दे देते हैं, सॉरी, जो कस्टमर्स हैं दे मेक द पेमेंट फर्स्ट, सप्लायर्स को पेमेंट बाद में होती है, राइट? So this is a very important thing to understand कि negative cash flow cycles can happen and they are actually very good for the company, right? जो भी कंपनी इन क्वेश्चन को आप एनालाइज कर रहे हैं, उस कंपनी की कैश फ्लो साइकिल नेगेटिव है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, और अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल को, कैश फ्लो साइकिल की कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, राइट? तो अब यहाँ पर जो है मैंने आपको कंपनी एक्स और कंपनी वाई, दो दो कंपनीज मैंने आपको इनके डेटा दिखाया हुआ है। बाय द वे, DSO refers to days sales outstanding, DOH refers to days of inventory on hand, and DPO stands for days payable outstanding. Okay, now let's first calculate the cash conversion cycle for company X given this data. Okay, अगर ये है तो if you remember, मैंने आपसे डिस्कशन पहले की भी है कि कैश कन्वर्टर साइकिल का फॉर्मूला क्या है? DSO, which is days sales outstanding, plus days of inventory on hand minus DPO, days payable outstanding, right? This is the formula. तो अगर मैं प्लग करना शुरू करूँ, DSO is 6, cash conversion cycle for company is going to be 6, plus days of inventory on hand is going to be 55, and then DPO is going to be minus 40. Okay, is equal to what? To what's the answer? The answer is going to be 55 plus 6 minus 40 is going to be 21. Okay, 21 days. Okay, remember cash conversion cycle जो है वो days में है, इसका आंसर आएगा it's going to be in days. Okay, generally. Now तो ये तो हो गया कंपनी X का। अब देखते हैं कंपनी Y की क्या सिचुएशन है, ये भी देखते हैं। कंपनी Y जो है वो उसके अंदर कंपनी का जो DSO है, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, दैट्स 3। ओके, तो कैश कन्वर्टर साइकिल इज गोइंग टू बी 3, ओके, प्लस DOH is going to be 60. Okay, days of inventory on hand is 60 minus DPO is 80. Okay, so cash conversion cycle के अगर कैलकुलेशन करें कितना आ रहा है कंपनी Y का, 3 plus 60 minus 80, it's going to be 17 minus 17. ओके, माइनस 70, दिस इज। सो अगर हम इन दो कंपनी से, कंपनी एक्स से कंपनी वाई को कंपेयर करें, तो वी कैन क्लियरली सी कि विच कंपनी इज इन बेटर पोजीशन in terms of cash converter cycle. It's basically company Y
is in a much better position because we know that the company has a negative cash conversion cycle, which means that the company receives uh, the company receives cash from its customers well before it pays its suppliers. Okay, which is a very good thing. और remember, मैं आपको repeat कर रहा हूँ, why is this good for the company? Because आपको बेसिकली अपना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है फॉर द नेगेटिव कैश फ्लो साइकिल। इसका मतलब है आप कस्टमर से पैसा लेते हैं और फिर आपकी प्रोडक्शन होती है या आपका आप उस पैसे को यूज करके आप अपनी जो है वो इन्वेंट्री रॉ मटेरियल खरीदते हैं और आप अपना जो है वो प्रोडक्शन करते हैं और आप फिर उसके बाद पैसे देते हैं। तो रिमेंबर, आपका पैसा नहीं लगता। बाय आप आई मीन यू बाय यू, व्हेन आई रेफर टू यू आई मीन दैट यू आर द कंपनी। ओके, लेट्स से यू आर द कंपनी। तो अगर अगर आपका नेगेटिव कैश फ्लो साइकिल है, दैट मीन्स दैट you are you don't need a lot of you are actually you don't need working capital, right? अभी आपकी working capital needs हैं, they are very low, okay, relatively very low compared to some other companies का net working capital is positive or it's very high, okay. That's an important discussion. Let's go right. So okay, now guys, that's it for this video. Next video के अंदर हम लोग discussion करेंगे. I'm going to discuss with you guys uh, how can companies improve their cash conversion cycle. The next video is going to be very important. इसके हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से अपना कैश कन्वर्ट साइकिल को बेसिकली शॉर्टन कर सकते हैं। ओके, रिमेंबर, improving your cash improving your cash conversion cycle means shortening your cash conversion cycle. Okay, and hopefully it goes negative, right? Because remember, cash conversion cycle, a negative cash conversion cycle is very good for a company. Okay, guys, that's it for this video. I will see you guys in the next one.